Hello friends, welcome back to another video. In this video, I will be providing you the solution of our chatbot challenge arcade citizen developer chatbot edition first lab, that is AppSheets to Google Chat using Webhooks from automation bots. Okay, before starting the solution, I simply want to inform you that I already uploaded the each and every lab solution. इसकी बाकी जितनी भी lab है सबकी labs का solution मैंने upload कर दिया है. ये last वाली lab का भी solution upload कर दिया है. बस यही लैब बची थी जिसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा. तो अगर आपको सॉल्यूशन एक्सेस करना है देन सिंपली क्लिक ऑन द आई बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर. जैसे आप ऊपर आई बटन क्लिक करेंगे आपको सारी प्रीवियस लैब का सॉल्यूशन एक्सेस हो जाएगा. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट दिस लैब एंड वेट फॉर द पेज टू बी लोडेड अप. Once the page get loaded, simply click on the start lab button and wait for the credentials. इस लैब में एक प्रॉब्लम बस ये है कि ये थोड़ा डिले होता है, इसमें बहुत सारे लैग देखने को मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है. मैं इसी वजह से अभी तक वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि काफ़ी एरर आए थे इसके चलते, तो आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना है. ठीक है, नाउ राइट क्लिक ऑन ओपन गूगल कंसोल एंड ओपन इट इन प्राइवेट विंडो और इन इनकॉग्निटो मोड, अदरवाइज यू विल नो that you will face certain issues. तो इनकॉग्निटो मोड में ही ओपन करना है. ईमेल आईडी विल बी ऑटोमेटिकली पेस्टेड अप. क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. वी नीड द पासवर्ड. कम बैक टू द लैब. पासवर्ड कॉपी करेंगे. कॉपी द पासवर्ड. कम बैक टू हियर. पेस्ट इट हियर एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. It's a welcome message. Click on I understand button and we get logged in into our Google Cloud console. After that, a pop-up of terms and condition will arise that we need to accept. इसे accept करना है. Click on agree and continue button. Now come back to the lab. Scroll down to the setup. Setup तक आना है. Setup के अंदर आपको एक ऐसा embedded link मिलेगा AppSheet login. Right click करेंगे इस पे and open it in private window or in incognito mode. Wait for this page to be loaded. पेज लोड होने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है एंड वी नीड टू साइन इन विद द स्टूडेंट आईडी दैट इज गिवन टू अस. सो क्लिक ऑन द गूगल or sign in with the Google and we will select our student ID here. So select it and we get logged in into our console. First of all, we need to allow some conditions. Don't worry, click on the allow button. Now here we need to cross this. Don't worry. Now come back to the lab. We need to copy a app. So scroll down, keep scrolling. And under the task number 1, we need to open this link in the private window or in incognito mode. Wait for this page to be loaded. So once the page get loaded, simply click on this copy app button. यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है कॉपी ऐप, इस पर क्लिक करना है एंड वी नीड द ऐप नेम. सो सिंपली कम बैक टू द लैब फॉर द ऐप नेम एंड कॉपी दिस इन्वेंट्री मैनेजर इन द लाइन नंबर 3. यू नीड टू कॉपी इट वेरी केयरफुली. कोई भी एक्स्ट्रा कोड या कॉमा आपको कॉपी नहीं करना है. रिमूव दिस प्रीवियस नेम एंड पेस्ट द न्यू नेम दैट वी कॉपीड एंड क्लिक ऑन द कॉपी ऐप बटन. नाउ द ऐप कॉपिंग विल टेक अराउंड 1 to 2 minutes. 1 से 2 मिनट आपको इंतजार करना है. सो सिट बैक एंड रिलैक्स. Now our app copying is now completed. Simply cross this and now come back to the lab. Scroll down. Now click on the check my progress and you will get the green tick in this app in this task also. Now scroll down. Now we need to open this chat.google.com. Right click on it and open it in private window. Now this page will take a lot of time to get completely loaded. थोड़ा सा टाइम लेगा. जब तक सारे पॉपअप अराइव नहीं हो जाए तब तक आपको थोड़ा वेट करना है, नहीं तो ये पेज डिले देगा. ओके, सो वेट फॉर इट. जब तक आपका ऐसा पॉपअप ना आ जाए इस पेज पे लोड होने के बाद, तब तक आपको वेट करना है. यू सिंपली नीड टू वेट फॉर दिस पॉपअप. आफ्टर दैट क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड बटन. कट दिस. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो काफी लैग आता है इस पेज में, तो ध्यान रखना है. नाउ आफ्टर दैट क्लिक ऑन द क्रिएट और फाइंड अ स्पेस. वी नीड टू क्रिएट अ स्पेस. क्लिक ऑन अ क्रिएट अ स्पेस बटन. वी नीड द स्पेस नेम. सो सिंपली कम बैक टू द लैब एंड स्क्रॉल डाउन एंड कॉपी दिस ऐप शीट नोटिफिकेशन एज अ नेम. इसे कॉपी करेंगे ध्यान से. कम बैक टू हियर. पेस्ट द नेम हियर इन द स्पेस नेम. क्लिक ऑन द क्रिएट बटन एंड वेट फॉर इट टू गेट क्रिएटेड. सिंपली कम फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर आपका ऐप शीट नोटिफिकेशन सिलेक्ट हो. जब आपका क्रिएट हो जाए उसके बाद आपका ऐप शीट नोटिफिकेशन सिलेक्ट होना चाहिए. अगर सिलेक्ट होगा तो आपको ऐसा ड्रॉप डाउन मिल जाएगा. क्लिक ऑन दिस एरो बटन. नाउ वी विल क्लिक ऑन द एप्स एंड इंटीग्रेशंस. वेट फॉर द पेज टू लोड. क्लिक ऑन द मैनेज वेब हुक्स. Now we need the name for the webhook. So simply come back to the lab, scroll down a little bit and copy this app sheet notification WH. Copy it very carefully. ध्यान से copy करेगी. Come back to here, paste it under the name, click on the save button and wait for it to get saved. Now we need to copy this URL. जो हमें URL given है इसे copy करना है. You can paste it anywhere you want. I am saving it under the new tab. एक new tab open किया और इसको यहाँ पर paste करके रख ले रहा हूँ, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी. Okay. Now cross this. After that, come back to the inventory lab and cross this. We need to press this button. Switch to the legacy editor. Now come under the automation part. Click on the task button. Now we need to create a new task. Now click on the new task button. We need to create a task. Now select a sell a webhook. यहाँ से हमें sell a webhook click करना है.
We need the task name, so simply come back to the lab, scroll down a little bit, keep scrolling under the task 4, copy this first name, task category नहीं, task name copy करना है. We need to copy this task name, copy it carefully, come back to the console, paste it under the task name. First of all, we need to remove this and paste the task name. Now scroll down a little bit. Now we need the URL. So for the URL, come back to the private tab that we opened and where we previously saved our URL. जो हमने पहले सेव किया था URL, उसको कॉपी करना है, पूरे URL को कॉपी करेंगे. Come back to here, paste, simply cut it. अगर pop-up आए तो कट करेंगे. Now paste it under the URL button. Now scroll down. From the HTTP verb, select post. Okay, we need to select post, not patch. Select post. Now we need the body. For the body, come back to the lab again. Scroll down. Keep scrolling. Now copy this whole command or whole phrase. Copy it carefully. Pura karna hai, enter and paste it here. Now click on the save button and wait for it to get saved. After that, we need to create a new processes. Okay. So come back to the processes. Once it gets saved, click on the new processes button. Now scroll down for the table. Select. Let me check what we need to select. Come back to the lab. Scroll down a little bit. We need to select products under the table. So simply come back to here and select products. Now scroll down. We need to click on the add as tab. First of all, we need to change the process name. So simply come back to the lab and copy the process name. That is this one, low inventory process. Copy this. Come back to here, click on this, remove this whole phrase and paste the name that we copied. Now click on this add a step button. Now scroll down, click on the create a custom step. अगर आपको एक बार में create a custom step नहीं दिख रहा हो scroll down करने पे भी, तो कंट्रोल दबा के scroll down कीजिएगा, पेज का साइज थोड़ा shrink हो जाएगा, फिर आपको create a step का बटन दिख जाएगा. ओके, so click on the create a step button. We need the step name, so scroll, come back to here, and for the step name, copy this report low inventory step. Copy this name very carefully, come back to here, paste it under the step name. Now scroll down. Now once you click somewhere else, you will get a notification or a card like this. We need to click on this. Under the custom task, we need to select report low inventory task and click on the save button. Okay, now wait for it to get saved. Now we need to click on the events button. जैसे सेव हो जाए हमें events पे आना है. Okay. Now from here we need to click on the new events and make sure all changes पे select हो. And from इससे हमें update only पे select करना है. From all changes to updates only. Now we need the event name. So click on this. Come back to the lab for the name. So scroll down. And the event name will be this one, low inventory event. Copy it very carefully. ध्यान से copy करेंगे. Come back to the console. Remove the old name, new event, and paste the name that we copied. And now scroll down, make sure tables के अंदर products ही select हो. Now under the condition we will select a phrase that is given to us. Scroll down and copy this, come back to here, paste it here, click on the save button and it gets saved. Now simply click on the save button and wait for it to get saved. Once it gets saved, click on the bots button. We need to create a bot. So under the bot, simply click on the new bot button. We need to create a new bot. And for the bot name, come back to the lab, scroll down, keep scrolling and copy this name, low inventory bot. ध्यान से copy करेंगे इसे. Come back to the lab or the console, paste the name. Scroll down, click on the create a custom bot. अगर create a custom bot आपको normally नहीं दिख रहा है scroll down करने पे, if you are unable to see create a custom bot name, then simply press Control and use your cursor down to minimize or shrink the page size. Okay, ऐसा करने से आपका create a custom bot आपको दिखने लगेगा. Click on the create a custom bot. Scroll down a bit. Click on create a custom bot. After that, we need to add a step here. So first of all, click on the configure button and scroll down a little bit, or simply click on the low inventory button and click on this arrow button. From here, we need to select low inventory process. You will see a card like this. Simply click on the save button after that and wait for it to get saved. Once it gets saved, simply click on this mobile button. We need to synchronize everything. So simply click on this, wait for it to get synchronized. After that, we need to test it. So simply come back to the lab, scroll down a little bit, keep scrolling. And under the task number 5th, copy this paper tower holder, copy it very carefully. Come back to here, click on the search button. We need to search for it. So paste it under the search bar and you will see a paper towel holder near card. Okay, make sure आप products के अंदर हो, otherwise you will don't see this paper towel card. अगर आप कैटेगरी या शिप में होंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, तो प्रोडक्ट्स में ही होना जरूरी है. क्लिक ऑन दिस, वी नीड टू एडिट इट. Simply come back, we need to edit it. Okay, so click on this edit button, scroll down, we need to decrease the price, so from 6 made it 5 and click on the next button, click on the save button. After that, click on the synchronize button. Once it gets synchronized, we will head towards the next task. Once it's get done, simply come back to the lab, scroll down a little bit, click on the check my progress and you will get a green tick in the task number 5th.
You can see assessment is completed. Now under the task number 6, first of all, copy this task name. We need to create a new task. Copy it. Come back to the console. Click on the task button. Make sure you are under the automations. Click on the new task button, and click on this call a webhook. We need to change the name. So remove this and paste the name that we copied. Scroll down under the table name. We need to select shipping. So click on the shipping button. Scroll down a little bit. For the URL, copy the same URL that we previously copied. जो हमने पहले सेव करके रखा था वो URL हमें कॉपी करना है. Come back to here, paste it here, and under the verb, select post. Scroll down. We need the body phrase. So simply come back to here. Scroll down a little bit. Copy this whole phrase. Come back to here. Paste it under here. Scroll down and click on the save button. Make sure it gets saved successfully. So we are simply फॉलोइंग द प्रीवियस सिमिलर स्टेप्स. तो हमें फिर से अब वही करना होगा. प्रोसेसेस क्रिएट करनी है नेक्स्ट न्यू प्रोसेस. सिंपली क्लिक ऑन द न्यू प्रोसेसेस. नाउ स्क्रॉल अप. यस, स्क्रॉल डाउन. मेक श्योर आप न्यू प्रोसेसेस के अंडर हो इस बार. नाउ कम बैक टू द लैब. स्क्रॉल डाउन. वी नीड द प्रोसेसेस नेम. So for the processes name, copy this shipping cancellation process. Come back to here. Click on this. Remove this name and paste the new name. Now click on this table and select shipping. This time shipping, and click on add a step, and click on create a custom step, and click on this. We need to change this name. So come back to the lab for the name. Scroll down a little bit. Copy this report shipping cancel step. Copy it very carefully. Come back to here. Remove this. Paste it. Now from the custom task, select report law inventory task. Click on this save button and wait for it to get saved. So once it gets saved, simply come back to the events. We will again follow the previous steps. So click on the new event button. Now we need to remove this new event name and paste a new name. So simply come back to the lab, scroll down a little bit for the name, copy this shipping cancellation event, copy it very carefully. ध्यान से copy करेंगे, कोई extra quote या full stop नहीं होना चाहिए. Paste the name that we copied, and आपको ये delete only select करना है. Make sure you select deletes only, and after that click on the save button and just wait for it to get saved. We need to make one more changes from the table. We need to select shipping. Okay, select shipping and again click on the save button. Okay, wait for it to get saved. Once it gets saved, simply come back to the bots. We need to create a new bot. Click on the new bot button. You need the bot name. So simply come back to here for the bot name. Scroll down a little bit. Copy this shipping cancellation bot name. Copy it very carefully. Come back to here. Paste it here. And click on the create a custom bot. Now click on configure event. We need to select shipping cancellation event. From this drop down menu, click on the arrow button. Select shipping cancellation process. And click on this save button and wait for it to get saved. Okay. So under the bot that we created, we are unable to see any card here under the run this process center. So we need to make sure हमने कोई error नहीं की हो. That's why we are coming back to the process, and we will again open this shipping cancellation process. Here we need to click on the add a step button. Scroll down a little bit and create a custom step. Now we need to remove this name, new step, and we need to paste a new name. So simply come back to here. Scroll down a little bit up, keep scrolling, and copy this shipping cancellation. No, scroll down a little bit up and copy this report shipping cancelled step. Copy this name. Come back to here. Paste it here. I'm not sure whether I done this task or not. So मुझे श्योर नहीं है, इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि एरर आ रही है. ओके, नाउ फ्रॉम द कस्टम टास्क वी नीड टू सिलेक्ट दिस. आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस सेव बटन. अगर आपका ऑलरेडी ऐसा कार्ड अपीयर हो रहा हो तो डोंट वरी. मेक श्योर आप लेकिन जो है हमारी शिपिंग कैंसिलेशन प्रोसेस के अंडर हो. ओके, नाउ कम बैक टू द बॉट्स वंस अगेन. आफ्टर सेविंग इट, कम बैक टू द बॉट्स, open this shipping cancellation bots, and you will see a card here. It means we successfully created the process. Now make sure you again select the shipping cancellation process and click on the save button. अगर आप save button activated हो तो आप save कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं. Okay, now come back to the next task. So now simply click on the mobile button. From here we need to click on the ship and receive. Come back to here, scroll down a little bit, and keep scrolling, keep scrolling, and copy this name paper tower holder. Copy it very carefully. ध्यान से copy करेंगे. Now come back to the console, paste the name under the search bar, paste it here. Open this, click on the delete button, click on the delete button. Now come back again. Now click on this, open it, click on the delete button, click on the delete button once again. Click on the cancel, come back to here. Open it, click on the delete button, make sure it gets deleted. Come back to here. Resynchronize it, click on the synchronize button to get synchronized. Now once it gets synchronized, we will come back to the lab, scroll down, click on the check my progress, and you will get the green tick in the last task also. You can see assessment is completed. Congratulations, our lab is also completed. Click on the end lab button, click on the submit button, give the star rating that you want to give.
You can also leave any additional comment. Click on the submit button. Come back to the main page to verify whether our lab is actually completed or not. अगर हमें अपनी लैब के बिसाइड ग्रीन टिक मिल जाता है तो मतलब हमारी लैब कंप्लीट हो चुकी है. ओके, सो सिंपली स्क्रॉल डाउन, कीप स्क्रॉलिंग, open it, and you will see a green tick beside our lab. It means we successfully completed our lab. Okay, so this is the solution of this lab. With this solution, we are done with this challenge and we will get the green tick for all the labs. With this we will receive our badge for this lab also, for the challenge also. हुआ क्या है, हमने सारी हर एक लैब के बिसाइड ग्रीन टिक मिल चुका है हमें. जब सारी लैब्स के बिसाइड ग्रीन टिक मिल जाए, ये वाला व्हाट्स नेक्स्ट ऑप्शनल है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई ग्रीन टिक नहीं चाहिए हमें. जितनी सारी लैब थी उनके बिसाइड हमें ग्रीन टिक मिल गया है, आपको भी मिल गया है, तो अब आप अपना बैच चेक कर सकते हैं. बैच चेक कैसे करना है कि मिला है या नहीं, एडिट हुआ या नहीं, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, so if you like the video, make sure you hit the like button, hit the subscribe button. If you have any query, you can ask me in the comment box or on the Telegram group. Okay, so that's it for this video. Thank you very much. Good.